Hello people. So here I'm giving you the solution of the weekly test. Here I am giving you the solution of the weekly test which we have organized on Saturday. So the topic was Coulomb's law and electric field due to point charge. So just look at the section A. The first question was there is a hexagon then placed in a horizontal plane and there are six equal charges. Two are fixed at its vertices. A point P is located vertically above the center of the hexagon. Height L by 3 from the plane of hexagon. Find the electric field at point P. Now, this question needs a 3D visualization. Visualization because the point is basically above the plane of the hexagon, right? So here already our diagram here. Here already I'm preparing solution now. Here already we have a here already have a diagram. Just look at the diagram here. This one is a hexagon, right? So this one is a hexagon. This one is a hexagon, and there are six charges. There are six charges like this charge. From the first charge, the Q, another charge, first, second, then third, fourth, fifth, as well as sixth, right? So this would be a straight line actually. A straight line. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a hexagon. Now, this is the point P. This is the point P at which you have to find out. This is the point P. This not out. Okay, this is the point P. Actually, you can say this was the point P. This is the point P. Okay. So this is the point P at which you are supposed to find out the electric field. Now, distance from this point to this point is equal L by 3 only. This is a L by 3. And you have to find out the electric field due to all charges at the point. So how you can find out? So you will use the concept of the principle of superposition will act here. Principle of superposition will work here. So the key concept is the principle of superposition. So here you have to calculate the electric field due to the single charge, and finally, if you will the vector addition of the electric field due to all charges, then you will get the final electric field at the point P. So first, let's try to look at the diagram that how we can find out the electric field due to the single charge, right? So let suppose I am trying to take this charge. Suppose I am trying to take this charge. So this charge will basically produce electric field here that can be calculated by the using of the Coulomb's law. And because this is the right angle, because this is a hexagon, so these lines will divide the hexagon among the six equilateral triangles, right? So if this length is L, then this length is also L, this length is also L, right? So the hexagon, basically if we have a hexagon like this, so the hexagon, right? So these lines divide the hexagon into six segments: 1, 2, 3, 4, 5, 6, and basically they all are equilateral triangles. Equilateral triangles means the triangles having the same side. So if the side is L, then definitely the because each and every side is L, then these lines are also will be of the length L, 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 and L. If this
So finally, look at the diagram. This length from this charge, let is the first charge. First charge. So from the first charge to O is the L. Now finally, try to make the diagram of the first charge. So suppose this is the first charge. This is plus Q. This is the center, that is O. From this charge to distance of O is L. This point is located. This P point P is located at a height of L by 3 from the center charge, from the charge. First, what we have to do, we have to find out the electric field difference, right? So how we can get the electric field? We know the formula of the electric field due to point charge, that is A into Q divided by distance between the charges. So what is the distance actually? From 1 to P, you have to take the distance from 1 to T. That is going to be L under root of L square plus L by 3 ka square. That is root of L square plus L by 3 ka square and complete square. And value of E is K divided by L square plus L square by 9. That is E is equal to K into Q divided by 10 L square by 9. E is equal to K into, you can say, 9Q divided over 10 L square. So this is the value of the electric. This is electric field due to a single charge, but this electric field is neither along the x-axis nor along the y-axis. It is basically tilted at some angle theta with respect to the x-axis as well as the y. Let this is x and this one is a y. मान लो ये पूरा का पूरा आपका जो है एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, या तो ना तो एक्स में है ना तो वाई में। नाउ वी हैव टू गो फॉर द वेक्टर रिलेशन, हमें इसको रिजॉल्व करना होगा। अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो हो जाएगा e cos थीटा एंड दैट इज गोइंग टू बी e। ठीक है, ऐसा होगा। आप यहाँ पे देखो, वापस मैं डायग्राम वही बना रहा हूँ। इसके दो कंपोनेंट, व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स? यहाँ पर मैं लाइन अगर ड्रॉ करूँ, ये आ जाएगा, लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज दिस वुड बी e cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, e sin थीटा हो जाएगा। दिस इज हैपनिंग विद अ सिंगल चार्ज। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट चार्ज? अगर आप इस चार्ज को यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे मिलाओ, अगर आप दूसरे वाले चार्ज, इस वाले चार्ज को भी, दूसरे वाले चार्ज को भी यहाँ पर, राइट, अगर आप इस वाले चार्ज को, मान लो इस वाले चार्ज को यहाँ से, अगर आप इस वाले चार्ज को यहाँ से मिलाओगे तो भी यही होने वाला है। इसके भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो e cos थीटा और दूसरा e sin थीटा। ये बेसिकली बहुत ही सिमेट्रिक सिचुएशन है। सिमेट्रिक सिचुएशन इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पर पॉइंट P ड्रॉ करो, तो जितने भी आपके e cos थीटा वाली पार्ट्स, दे विल कैंसिल ईच अदर। e cos थीटा यहाँ पे, 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 ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएंगे एंड दे विल कैंसिल ईच अदर। ये सब आपके क्या है, e cos थीटा, e cos थीटा। तो और क्या हो जाएगा, मींस इसका जो x एक्सिस का कंपोनेंट है, मतलब आपका जो x एक्सिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x फील्ड, x एक्सिस के अलावा जितने भी कंपोनेंट, वो सब एक दूसरे को कैंसिल, कुछ बचने वाला है नहीं पॉइंट P पर। अब आप अगर वर्टिकल कंपोनेंट को देखो P पॉइंट पर, तो जितने भी है ना, सब ऐड होता है। ठीक, सॉरी, तो e sin थीटा, e sin थीटा प्लस e sin थीटा, और ये कितना 6 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप y एक्सिस पे देखोगे, अगर आप y एक्सिस पे देखोगे, तो ये आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और ये y डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये आपका जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6e sin थीटा। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द e एंड sin थीटा। e का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब बात आती है sin थीटा की। sin थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? sin थीटा अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से L/3 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा L स्क्वायर, हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ
एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 9, ये आ जाएगा आपके पास एल बाई 3 डिवाइडेड बाय एल √10 अपॉन 9, that is L by 3 into 9 upon L 9 upon, okay, that is not a 9 actually, this is a 3 3 आ जाएगा 9 L square plus L square 10 L square, ये आपका आ जाएगा, this is 3 actually, this is 3, ठीक है, ये 3 होगा, this is L by 3 into 3 divided by L √10, now 3 and 3 gone out, L and L gone out, this is 1 by √10. now finally EY की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पता है, ये होता है 6 E sin थीटा, ये आ जाएगा 6, E की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे ला करके पेस्ट कर सकते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे ला करके वापस पेस्ट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू E की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपकी E की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू, ये आपकी E की वैल्यू आ गई जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था। और बाकी हम यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू रख लेंगे, और साइन थीटा का वैल्यू है अपने पास 1/10, फाइनली देखो आ जाएगा 6 के 9 क्यूब अपॉन 10 एल स्क्वायर इंटू 1/√10, आपके पास की वाई की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना, तो आप कैलकुलेट कर लेना फिर की वैल्यू रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ये आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं वीडियो फिर बना के डालता हूँ।